Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is continuation of the CNC Programming Basics. So if you remember in the last video, we started with a single operation that was performed on a lathe machine. So एक plane turning operation हमने discuss किया था. And then later on we added some additional operations as well. So let me start with the presentation, so we will discuss the programs one by one. So this is for your practice. It is a similar example that we did in the last video. So just go through these codes and interpret the program, that what are the commands and what will be the output of each and every block. So वही फॉर्मेट है वो पहला जो प्रोग्राम सेटअप वाला ब्लॉक था वो मैंने स्किप कर दिया है. So almost in all the programs that first section of the program will be similar, in which you will identify the tool, you will set the tool, you will set up the spindle speeds, etc., etc. So here you can see additional specifiers within each block. So every line of a CNC program is normally considered as a block. So N10 is one block, N20 is another, and so on. These N specifiers are nothing. They do not affect the CNC program. They are just line numbers. So for your reference. So for example, if you want to edit any CNC program later on, so simply by calling that particular line, you can directly go to that desired position, and then you can do changes in that particular block. So you can write line number as N1, N2, N3, N4, N5, etc. So you can start those numbering from any number. Normally, the practice is that we give those line numbers in increments, so that if we later on, if we want to include some other lines, so we will have a space in between two blocks. For example, अगर N20 और N30 के बीच में मैं कोई block insert करना चाहता हूँ, so now I have a space of 10 lines over here. So you can give an increment of 5 units or 10 units or maybe 20 units. या simply आप continuously 1, 2, 3 पे जा सकते हैं. But in that case, if later on you want to edit the program, so then you will have to renumber those blocks. So again, it is a similar example. It is a plane turning operation in which the cutter will move to the desired position. This is the initial position. So from this point to this point, it will be G00, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप G1 में जाएंगे, because it is a linear cut. So rest of the commands are the same. For example, tool number is 1, M6 is for tool change, G97 is for cutting speed, and then I have mentioned the spindle speed, which is 2000 RPM, and so on. G00 में आप जाएंगे पहले, फिर G01 में आप जाएंगे. So this is basically your task. So you have to interpret this program. Theory जो है वो हम last video में इसकी कर चुके हैं डिटेल में. So I will not explain this any further. Here we have another program in which we again have some linear cuts on the lathe machine. So I have typed in the full program for that particular part, और हर एक ब्लॉक की explanation जो है वो भी given है. So simply read the program and read the interpretation of
the blocks के what does each block mean. This is another reference program for plane turning. This one is another जो कि slot बन रही है. It is on vertical machining center. 3 axis machine की job है. तो this is the top view. टॉप व्यू में आपको नज़र आ रही है. सो इसमें एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको मिलेंगे. सो द डिटेल इज़ गिवन आल्सो ऑफ ईच एंड एवरी कोड. सो सिंपली गो थ्रू दिस प्रोग्राम एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज ईच कमांड मीन. फिर प्रिज्मेटिक पार्ट्स के लिए ही 3D मशीन यानी 3 axis मशीन पे एक दूसरी एग्जांपल है. सो द ऑपरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 तक लीनियर कट है. देन वी हैव अ सर्कुलर कट. R is given. So the only additional command that you will see is this circular cut, which will either be G2 or G3. सो G2 और G3 का मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर कट्स के लिए आप यूज़ करते हैं. सो as we will start the operation from point 1, so the cutter will first be inserted in the workpiece at position number 1, and then it will move forward to position number 2, और उसके बाद जो आपका कट शुरू हो रहा है that is the circular one. So you have to use G2 or G3. So then you will look for the direction of the cutter. ये अगर यहाँ point 2 से point 3 तक आप जा रहे हैं, so this is a counterclockwise arc. So for counterclockwise you will be using G3 command. Yeah, so this is that command that you will use G3. और बाकी जो methodology है that will remain the same. So you will have to give the x value, the y value or the z value of the second position. जो start point है वहाँ पे तो cutter आपका है. So जो end point है उसकी position आपने देनी होगी, and then you will give the r value. ठीक है ना. So I जो है वो मैंने in terms of I और j लिखी है. ठीक है ना. But instead of I and j, simply you will write r and 5 because the radius is given. So advanced programming में I और j का concept जो है वो use होता है. So again this is for your information कि अगर G3 या G2 के साथ I, j या k की value जो है वो available हो, so that will also be considered as the radial distance. ठीक है ना. So it is basically the distance of the arc from the center point. अब इस केस में अगर आप देखें तो r की वैल्यू जो है वो सेंटर पॉइंट से it is in the y direction. So the horizontal is y, vertical जो है वो आपका x axis है. So I, j और k की वैल्यू जो है that is from x axis, y axis and z axis. ठीक है ना. सो x y z के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो i j k वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, तो वो फॉर x वी राइट i, फॉर y j एंड फॉर z वी यूज़ द k प्रीफिक्स. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल इज़ द x एक्सिस, वर्टिकल जो है वो आपका y एक्सिस है. सो पॉइंट 2 को अगर आप देखें तो पॉइंट 2 से आपका जो सेंटर का डिस्टेंस बन रहा है दैट इज़ इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और वो वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो आपका y एक्सिस है. तो आपने y की वैल्यू देनी होगी. ठीक है ना. इफ़ इट वुड बी लाइक इन द x डायरेक्शन, तो वो फिर आप j के बजाय जो है वो i की वैल्यू देंगे. सो i 5 होगा और j आपका 0 होगा, एंड रेस्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है ना. सो सिंपल G00 और G1 की कमांड से ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं. सिर्फ इन बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3
you will use the G2 or G3 command, and that will depend upon the direction of the cutter. For example, if you start the operation from position number 5, अगर यहाँ से आप start करते हैं, so it will be G1 and this one will be G1 और फिर 0.3 से 0.3 तक जब आप आएंगे, so this is the clockwise direction. So instead of G3, then you will be using G2 command, and x y की value और r जो है वो 5 ही होगी, So keep this in mind that if the r value is given, so you can directly use the r value, which will be in this case x25 y20 r5. अच्छा, the program is given both in absolute system as well in incremental system. So for example, if you want to use incremental system, so in absolute system you have a fixed 0 point or origin point, which is for example this one. So for incremental system, the first move will be from this origin point. यानी for example अगर आप x10 और y10 देते हैं, so that x10 in the horizontal direction and y10 in the horizontal direction will be measured from this origin point. And for P2, the origin will be P1 if you are working in incremental mode. This is another program for plane turning operation. यहाँ पे भी G1 use होगा, so you have a linear cut and then ये corner जो है ये fillet किया गया है and the R value is given. So यहाँ पे मैंने R की value use की है, which is this one. Rest of the options remains the same. यानी जो program setup का होगा और जो tool change के लिए आप use करते हैं या spindle speed के लिए. So first ये जो है वो safe position है. You have to bring the cutter from this point somewhere near this particular point, और फिर आपने ये linear cut जो है वो लेना होगा, and then at this point you have to change this G1 to either G2 or G3. So again, if you look into the direction of the cutter, so यहाँ से जब आप जाएंगे, so this will be the arc direction, which is again counterclockwise direction. So you will be using the G3 command. So G3 और उसका end point arc का ये है. So यहाँ पे जो भी x और z की values होंगी वो आप enter करेंगे, and then you will give the r value. R value here is 60. So this one. And instead of R, if you want to use I, J और K values, so G3 की command के साथ जो है वो फिर आप I, J और K value enter करेंगे. So this is an example for 3-axis machine, एक prismatic part के लिए. So last class में हमने जो discuss किया था example, that was for turning operation. So this is for milling, or you can say vertical machining center. So the units are in inches. जो last example हमने किया था उसमें हमने metric system use किया था. So instead of G20 we will be using the G21 command. So suppose this is the work piece size. X direction में for example उसकी length जो है वो 5 units है. Width is suppose 4 units. 4 units means 4 inches. And the depth or height of the workpiece is, let us say, 1 inch. So we have the workpiece size of x5, y4 and z1. So this is our workpiece. So ये आपका x-axis है, the coordinates are given. This is the y-axis and vertical is the z-axis. So 5 inch by 4 inch by 1 inch का वर्कपीस है हमारे पास. Suppose the tool that is located on the turret position 3,
will be used for the operation. And let us say that tool is an end mill tool. So end mill और उसका size भी given है 1/4 inch. So end mill tools जो है normally they are vertical tools like twist drill, but twist drill has a pointed edge and they have a flat end point, but on that flat face they do have the cutting teeth. So basically जो end mill cutters होते हैं they cut the material or remove the material from two sides. जो outer periphery है, जो circumferential side है, वहाँ पे भी cutting teeth जो है वो ground होते हैं, so they can remove the material through the outer periphery and as well as through the end face. So end mill cutter जो है वो हम यूज़ करेंगे and the size of the cutter is 1/4 inch. 1/4 inch means 1/4 inch diameter है उसका. And let us say the tool start position is x0, y0 and z1, relative to the workpiece. Suppose you know the current tool position, which will be x0. x0 means exactly the tool will be on this particular location, x0 or y0 और इससे height पे है, so the cutting tool will be above this corner and the height from the workpiece of the tool is 1 inch. So it is located 1 inch above this lower left corner of the workpiece. So this will be the current position. So from this point you will have to start the CNC program. परसेंट जो है नॉर्मली प्रोग्राम स्टार्ट के लिए शुरू किया जाता है एंड आफ्टर द परसेंट यू नॉर्मली राइट द प्रोग्राम नेम और द ऑथर नेम या जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उस प्रोसेस के बारे में, सो यू कैन राइट दैट, सो इट विल not be interpreted as a code for the program, so ये information के लिए है. So the controller will basically skip the lines starting from percent sign. So percent and then program number मैंने लिखा हुआ है, let us say it is program number 1. So the first code, if you remember in the previous video we studied, is that program setup जब आप करते हैं तो you will first set the system of units and then the type of coordinate system के absolute system आप यूज़ करना चाहते हैं या incremental system आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना. और यहाँ पे आप देखिए मैंने वो जो line numbers हैं वो भी include कर दिए हैं. So let us say N5 is my first line and I will go in increments of 5. So the coordinate system will be absolute system. G90 जो है वो absolute के लिए यूज़ होता है और G91 जो है वो incremental programming के लिए. So I want to use the absolute system. So G90 and then as the units are in inches, so instead of G21 I will use G20. So G20 inch system के लिए G21 जो है लास्ट प्रोग्राम में हमने G21 यूज़ किया था मैट्रिक सिस्टम के लिए या मिलीमीटर सिस्टम के लिए. Then tool change as it is located at turret position 3, so I will simply write M6. M6 is for tool change and tool 3 मैंने लिख दिया है. Then I will start the spindle in the forward direction. So M3 जो है वो फॉरवर्ड के लिए, M4 रिवर्स के लिए और M5 जो है वो स्पिंडल स्टॉप, ठीक है ना. तो ये 3 कमांड्स आप याद रखें. सो यू हैव टू फर्स्ट मेंशन द स्पिंडल डायरेक्शन एंड देन स्पिंडल स्पीड आप जो है वो इंटर करेंगे और स्पिंडल स्पीड के लिए जो प्रीफिक्स आप यूज़ करते हैं दैट इज़ द एस प्रीफिक्स, ठीक है ना. सो M3 as 1200. Next line is the tool positioning. So आपने
जो है वो जो ऑपरेशन आपने स्टार्ट करना है उसके लिए आपने फिर टूल जो है वो मूव करना होगा. सो द करंट लोकेशन इज अबव दिस कॉर्नर पॉइंट which was G00, X0, Y0 and Z1. So for example आपने जो है वो यहाँ पे कहीं यानी X1 पे और Y1 लोकेशन पे एक स्लॉट लेटर से स्टार्ट करना है एक ऑपरेशन जो अभी आप देखेंगे. तो आई वांट टू start a cut from X1 and Y1. ठीक है ना. So you have first to move the cutter to that particular desired location, and then you will insert the tool within the workpiece, and then you will start the operation. So G00 X1 Y1, again it is positioning, so it will simply move the cutter to the X1 and Y1 location somewhere over here above the वर्कपीस. यहाँ पे मैंने Z की वैल्यू जो है वो मेंशन नहीं की. सो इट विल टेक द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द Z विच इज़ Z1. सो ये पोजीशन जो होगा करंट पोजीशन इट इज़ बेसिकली X1 Y1 एंड Z1. ठीक है ना. सो यहाँ पे आपका टूल जो है वो मूव हो जाएगा. देन इन द नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे मैंने Z की वैल्यू मेंशन की है Z.125. एंड रिमेंबर दैट आई हैव टेकन दिस लोअर लेफ्ट कॉर्नर एज माय ओरिजिन पॉइंट. ठीक है. सो जहाँ पे आपको ये XYZ का आइकन नज़र आ रहा है, आई हैव टेकन दिस एज द origin point or reference point, you can say. So from this reference, if I write Z.125, so this means that G00 पहले आप X1 Y1 में गए हैं diagonally, the cutter will move over here and then it will move downward towards the workpiece. और कितना units है, that is Z.125. So as the लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो है वो आपका ओरिजिन है और बिल्कुल वर्क पीस के ऊपर जो है ये हमने Z0 लिया हुआ है. ठीक है ना. सो इट विल द कटर विल स्टॉप एट 0.125 इंचेस अबव द वर्क पीस. ठीक है ना. सो ये हमने कटर को पोजीशन कर दिया है एंड देन this positioning will be in a rapid move. ठीक है ना. So the tool will basically move at its maximum feed rate. ठीक है ना. So maximum speed पे X1 Y1 पे जाएगा और fast traversing में या fast movement में ही वो फिर Z डायरेक्शन में वर्क पीस की तरफ नीचे जो है वो लोकेट हो जाएगा above the work piece at 0.125 inches distance. Then we will be inserting the tool into this workpiece at the controlled feed rates or specified feed rates. So इसके लिए फिर आपने G01 की कमांड जो है वो यूज़ करनी होगी, which is this one. ठीक है ना. So initially ये वो X1 और Y1 की लोकेशन है. ठीक है ना. So the cutter was here. We moved the cutter in X1 and Y direction diagonally above this point. Then we move it downwards and it stays above the workpiece at a distance of 0.125 units. And then after that, at controlled feed rate, we have further ordered the tool to move downwards towards the workpiece at Z minus 0.125. So Z minus 0.125 means your work piece का surface है that is Z0. So if it is a negative value, so this means that you are going inside the workpiece. So the total depth of cut in this case will be 0.125 inch. So G1 है, Z में ही सिर्फ हम जो है वो आगे मूव कर गए हैं और डेप्थ जो है वो चूँकि it is negative value, so it will move below the surface of the workpiece. So the tool at this point has now been inserted into the workpiece at the feed rate of 5 inches per minute.
ठीक है ना. So till this point, this will be the effect of the cutter on the workpiece. Next line is, let us say we write x4 and f20. So x4 को अगर आप देखें, so I have before x nothing is written like G00 or G01 or G02. So what will be the interpretation of the machine control unit? So as X, Y, Z are the move commands, they are coordinates, so they will look for the move code. और move code जो है वो आपके G1, G2 और G3 etc. है. So if the code is missing, so it will look for the previous available code which you have used. और इससे पिछला जो ब्लॉक अगर आप देखें तो इसमें हमने G1 ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना. सो इट विल टेक G1 फॉर दिस पर्टिकुलर X, Y और Z वैल्यू, ठीक है ना. सो मैंने सिर्फ X की वैल्यू मेंशन की है. सो दिस मीन्स दैट द कटर विल ओनली मूव इन द X डायरेक्शन फॉर दिस ब्लॉक. एंड अगर F की वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता तो it would then take this F value for this particular move. But I have changed the feed rate from 5 to 20 inches per minute. So because drilling में जब आप tool insert करते हैं, so normally speed जो है वो हम slow रखते हैं, and then axial moves के लिए you can change the feed rates to some appropriate speed. So let us say the F value is 20 for this command. So X4 means the cutter after this point it will move in the X direction, which is this direction. So you have inserted the tool and now the tool will be moving in the X direction, और चूंकि X हमने positive value दी है, so it will be moving in the toward the right side of the workpiece. So this is the total cut. So X4 means that the cutter will move 4 units in the positive X direction. So this will be the end point of this particular operation. So ये आपका एक linear cut जो है वो बन गया है. Let us say next block में हम लिखते हैं Y3. So Y3 means the cutter will move in the positive Y direction. Feed rate will remain the same. This is 20 because feed rate भी मैंने यहाँ पे mention नहीं किया और G01 या G02 भी mention नहीं किया. So this G01 is basically in continuation with these blocks. So the cutter will move in positive Y direction. Total length will be 3 inches and feed rate will be 20. So this will be the final move after this block. Let us say the next block is X1 and Y1. So यहाँ पे अगर आप देखें तो I have moved the cutter only in the X direction and the Y direction, but in this block you can see that I have inserted both the values for X and Y. So XY means that it will follow a diagonal path, and as it is a linear cut, so straight line ही होगी because it is G01 command. So linearly it will move the cutter to X1 and Y1 position. और X1 Y1 अगर आपको देखें तो आपका start point ही था, this one. So this will be the effect of this particular block. The feed rate will be the same, which is F20. Suppose यहाँ पे आपका कटर आ गया है. Now if I write Y3, so again it will move the cutter in positive Y3 direction. Exactly यही code है,
लेकिन वहाँ पे इनिशियल पोजीशन हमारी ये थी, यहाँ पे अब करंट पोजीशन जो है वो ये है. So it will only move the cutter in the y direction, with reference to the current position. So अब यहाँ पे आपका 3 यूनिट जो है वो चला जाएगा, ठीक है. So this will be the final position of the cutter after this particular code, which is line number 50. And suppose again if I write x4 y1, so x4 जो है वो ये position है और y1 की, so the cutter will move back to this particular position, which is this one. Then if you want to move the cutter back to the initial position, so if I write now G00, G00 means it is only positioning. So the current location is at this point, और अभी जो टूल है वो इंसर्टेड ही है, यानी माइनस z डायरेक्शन में ही है, विच इज़ z minus 0.125. So now if I write G00 and Z1, this means that the tool will move in the upward direction और 1 inch above पे जो है वो आपका टूल जो है लोकेट हो जाएगा. And then if I write x0, y0, so first the cutter will move upward in the z direction, and then it will move to the x0 and y0 location. So जो आपकी करंट लोकेशन थी वो उसी लोकेशन पे आपका टूल जो है वो वापस चला जाएगा. And then if I write M5, so it will stop the spindle, and then M30 it will stop the program. तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कूलेंट यूज़ करना हो, so first operation जब आप start करेंगे, in which you will insert the tool, which is this one. So M30 के साथ I can write here M8. So the coolant will become active at this particular block. और फिर जब आपका ऑपरेशन इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा, यानी Z1 पे, so here you can turn off the coolant. So उस केस में फिर आप यहाँ पे M9 लिखेंगे. So M8 is for coolant on, M9 is for coolant off. So this is how you will write the programs if you have a 2-axis machine or 3-axis machine. So बहुत ही simple है. As I said in the previous video that जो CNC programs हैं basically उसमें आपने Y और जो Z moves हैं वही आपने locate करने होते हैं, ठीक है ना. So you only need to identify the start point and end point of the operations, and then you will be using some appropriate code in combination with machine code also. यानी एक तो move codes जो है, जो traversing के codes हैं, जो कि G codes होते हैं, वो आप यूज़ करेंगे, और साथ साथ में जो machine function जो भी आपने activate या deactivate करना हो तो वो आप यूज़ करेंगे. So I hope you will now have some basic idea of the CNC programs के CNC program जो है वो आप start किस तरह करेंगे, and what are the portions involved in the CNC programs, और coordinates जो है वो उनकी values आप किस तरह enter करेंगे. So remember that तीन steps हैं वो आपने करने होंगे. First step में आपने जो set of blocks होगा उसमें आपने प्रोग्राम सेटअप करना होता है, जिसमें टूल चेंजेस और जो स्पिंडल स्पीड्स है, कूलेंट ऑन ऑफ करना हो, कटर लोकेट करना हो, वो उसके बाद आपका कटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और आखिर में आपका जो सेट ऑफ ब्लॉक होता है इट इज़ फॉर मशीन स्टॉप. आपने मशीन स्टॉप करना होता है, और कटर जो है वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे वापस लोकेट करनी होती है. सो ये 3 स्टेप्स जो है वो आपने करने होंगे हर एक CNC प्रोग्राम में. प्रोग्राम सेटअप, मटेरियल रिमूवल, एंड देन सिस्टम शटडाउन. सो दीज आर रेफरेंस प्रोग्राम्स जो कि अभी हमने एग्जांपल में मैंने आपको बताया था. सो
उसमें ये स्टेप्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना। सो ये प्रोग्राम सेटअप वाला है, ये मटेरियल रिमूवर वाला है, और ये सिस्टम शटडाउन वाला है। So it is the recent program that we just discussed. Here are some of the programs which are for your reference. So just go through these programs, interpret them, and try to make the resultant profiles of each and every program. दिस इज़ ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये प्रोग्राम आप रीड करें और टू डायमेंशनल फिगर बना के इसका जो आउटपुट यानी प्रोफाइल आपको बनता है वो ड्रा कर लें कि किस तरह वर्क पीस का आउटपुट शेप जो होगा, जो रिजल्टेंट शेप होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। दिस इज़ अनदर प्रोग्राम, रीड इट एंड ट्राई टू मेक द रिजल्टेंट प्रोफाइल कि वर्क पीस जो है वो किस तरह नज़र आएगा इस ऑपरेशन के बाद, ठीक है। ये 3 एक्सेस मशीन के लिए प्रोग्राम है, ठीक है ना। दिस इज़ अनदर प्रोग्राम फॉर टर्निंग, ठीक है ना। सो सिंपली रीड दिस एंड ट्राई टू मेक द रिजल्टेंट प्रोफाइल। ये G2 और G3 के रेफरेंस है जो मैंने I, J और K वैल्यू का आपको एग्जांपल दिया है। सो यू कैन यूज़ द R वैल्यू और यू कैन यूज़ द I, J, K वैल्यू। सो I वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे और J वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका रेफरेंस है, ठीक है ना। सो आपने जो स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क होती है और जो सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क होती है उसके बीच में जो आपका एक्स डिस्टेंस या वाई डिस्टेंस या अगर जेड डिस्टेंस की डायरेक्शन में हो तो आपने वही वैल्यू जो है वो एंटर करनी होती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बताया, अगर वाई डायरेक्शन में आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का डायरेक्शन बन रहा है, सो आपने जे की वैल्यू एंटर करनी होगी, ठीक है ना। सो लाइक इन दिस केस, सो अगर यहाँ पे आप स्टार्ट और एंड में अगर आप देखें तो स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट में जो आपका डिस्टेंस बन रहा है सेंटर का वो अलोंग एक्स है, वाई एक्सेस है, जेड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर आप आर के बजाय आई जे के की वैल्यू यूज़ करते हैं सो दैट विल बी द जे वैल्यू, ठीक है ना। आई वैल्यू जो है वो उसमें उसमें आपका ज़ीरो है, जो डिफरेंस है स्टार्ट पॉइंट का और एक्स डायरेक्शन का, ठीक है ना। सो और अगर हॉरिजेंटली डिस्टेंस है तो वो फिर एक्स की वैल्यू आप देंगे, ठीक है ना। सो इन दिस केस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आर्क जो है वो आप रिवर्स कर दें, ठीक है ना। सो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं तो दिस वुड बी देन द स्टार्ट पॉइंट और ये आपका एंड पॉइंट होता। तो स्टार्ट पॉइंट से फिर सेंटर का डिस्टेंस आपका बन रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो उस केस में फिर आप आई जो है उसकी वैल्यू देंगे और जे की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। सो बाय कंसिडरिंग दिस फिगर, सो अगर ये 1 यूनिट है तो दिस मीन्स के जो आई की वैल्यू है वो ज़ीरो है और जो जे की वैल्यू है वो 3 यूनिट्स है, ठीक है ना। सो हर एक ब्लॉक अगर आप देखें तो 1 यूनिट है, सो 1, 2 और 3 यूनिट्स आपका बन रहा है। So you can write this as G2 x 4 यानी जो एंड पोजीशन है वो x और y की वैल्यू आप देंगे, x 4 y 1 हो जाएगा और I जो है वो 0 है एंड j is -3, और यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है ना। सो I और j के बजाय आप, so that is why leave this I j k इंटरप्रिटेशन, ये एडवांस प्रोग्राम के लिए है। बाज़ औक़ात जो है वो रेडियस गिवन नहीं होता, इरेगुलर प्रोफाइल होते हैं। सो इन दैट केस वी नॉर्मली कैलकुलेट द एक्सियल डिस्टेंस ऑफ द स्टार्ट पॉइंट एंड द
सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व. सो उस केस में हम आई जे के वैल्यूज जो है वो इंटर करते हैं. ठीक है. सो दीज आर जस्ट फॉर योर रेफरेंस. सो आई ज़ीरो जे माइनस थ्री के बजाय डायरेक्टली R3 अगर आप लिख लें, सो यू विल गेट द सेम मार्क इन द प्रोग्राम. सो आपने सेंटर पॉइंट से, यानी सेंटर पॉइंट जो भी हो एक्स और वाई की वैल्यू, जो स्टार्ट पॉइंट की वैल्यूज़ हैं वो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर लें, so you will get the result. This is another program. तो ये आपके रेफरेंस के लिए हैं. सारे प्रोग्राम जो है मैंने स्लाइड्स में डाल दिए हैं. तो G2 और G3 से रिलेटेड ये दो प्रोग्राम्स हैं. ठीक है ना, जिसमें G2 और G3 की कमांड यूज हुई है. ठीक है ना. सो इंटरप्रेट दैट एंड ट्राई टू मेक द रिजल्टेंट प्रोफाइल के किस तरह आर्क जो है वो वर्क पीस पे बनेगा. ओके, so that's it. One more thing, let me show you the simulation of the program that we just made in the previous video. उसमें हमने एक प्लेन टर्निंग का ऑपरेशन किया था और कटर को एक्सियली जो है वो मूव किया था. सो इट इज़ अ CNC सिमुलेटर, फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, यू कैन यूज़ इट. सो लेट मी फर्स्ट रन द प्रोग्राम सो दैट यू शुड नो कि क्या हो रहा है. ठीक है ना. So on the right side the program is shown, जो कि कमांड्स हमने यूज़ किए हैं. सो let me zoom it a little bit further so that you can see क्या हो रहा है. So ये प्लेन टर्निंग ऑपरेशन है. Okay, let me move it a little bit in this direction so that you are able to see the result. So let us move back to the start of the program. I will explain it step by step. So इसमें जो ऑपरेशन इन्वॉल्व है, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेन टर्निंग का ऑपरेशन है और प्लेन टर्निंग में स्टेप टर्निंग है. सो द कटर फर्स्ट मूव टुवर्ड्स द वर्क पीस, इट रिमूव्स द मटेरियल अप टू हेयर, और फिर थोड़ा सा डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है एंड देन द कटर मूव्स फॉरवर्ड. ठीक है ना, यहाँ तक. फिर उसके बाद एक ड्रिलिंग का ऑपरेशन जो है वो मैंने इंसर्ट किया हुआ है, और एक ग्रूव कटिंग का ऑपरेशन है विच इज़, अगर आप देखें तो ये ऑपरेशन जो है ये ग्रूव कटिंग का ऑपरेशन है. ठीक है ना. तो एक सिंपल ग्रूव जो है वो मैंने बनाई हुई है. Let me change the orientation so that you can easily see the drilling operation as well. And in the for this program, the origin point is the center point of the workpiece, which is this one. यहाँ पे ये cross जो है वो बना हुआ है. So my program is with reference to this one. Total length of the workpiece is 500, but irrespective of that length, if I take this as my reference point, so this will be Z0. ठीक है ना. और फिर जब नेगेटिव वैल्यू में आप जाएंगे तो इस डायरेक्शन में आप जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इस डायरेक्शन में होगी. इफ़ आई टेक दिस सेंटर पॉइंट एज 0 फॉर the radius, so whatever is the diameter, वो वैल्यू मैं आप दूंगा तो कटर जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा. सो डायमीटर इज़ 100 यूनिट्स. ठीक है ना. सो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा प्रोग्राम में x100,
so the cutter will exactly stay above the outer periphery of the workpiece and it will be slightly touching that particular surface. अगर x negative आप देंगे so the cutter will move inside the workpiece. अगर x positive आप देंगे so the cutter will move away from the workpiece. Similarly, right side is the z positive direction, left side towards the spindle is the z negative direction. So this first code is for basically this program or any other machine. So मैंने आपको reference point का बताया था कि normally machine पे आपके पास switch available होती है. But if you want to use or change the reference point within the program, so the code that you can use is G92 code. ठीक है ना? So मैंने ये point locate किया हुआ है which is वो Z478 पे आ रहा है. ठीक है ना? So I will simply write G92 and Z478. So it will locate this point and will take this as a 0. ये उसको origin point ले लेगा. ठीक है ना? So ये Z direction में 478 point है. ये cross जो आपको नज़र आ रहा होगा. This one. ठीक है ना? So this is basically at Z 478 और ये बेस स्पेसिफिकली ये जो वर्क पीस का लेंथ है सो एंड फेस इस पॉइंट पे आ रहा है. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन Z as 478. So if I write G92 Z100 let us say, so Z100 would mean कि जो चक है जो उसका सेंटर पॉइंट है वहाँ से 100 यूनिट्स पे जो भी पॉइंट आएगा द सिस्टम विल रीड दैट पर्टिकुलर पॉइंट एज द ओरिजिन पॉइंट और वो उसको Z0 कंसिडर करेगा. सो इन दिस केस द मशीन विल टेक दिस पॉइंट एज Z0. So this is the scenario. So let me start the program step by step. So these are instructions workpiece के बारे में और program registry के बारे में कि कौन सा program है. So as it reads the workpiece size तो वो वर्कपीस जो है उसने लोकेट कर दिया है. परसेंट अगेन इज़ यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन. सो परसेंट के साथ मैंने प्रोग्राम नंबर 1 जो है वो लिख दिया है. सो माय फर्स्ट कमांड इज़ G92 रेफरेंस पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इट विल बी दिस द एंड फेस. फिर जो कोड हमने यूज़ किया था लास्ट क्लास में और अभी इससे पहले G21 इंक्रीमेंटल सिस्टम के लिए मैट्रिक सिस्टम होगा. मिलीमीटर्स में डायमेंशंस हैं हमारे. G90 जो है वो एब्सोल्यूट सिस्टम होगा. So all the points in this program, all the coordinates will be measured from this particular point. G00 X150 Z50. So जैसे ही आप ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे so the turret will first move to this particular location. यानी ये 00 है तो X150 में आएगा और Z50 में आके टूल चेंज जो है वो परफॉर्म कर लेगा. सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस. सो दिस येलो square basically shows you the current command that has been executed. So अभी ये जो execute हो रहा है वो G21 और G90 है. ठीक है ना. सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो सेट कर रहा है और पोजीशनिंग सिस्टम सेट कर रहा है. ठीक है ना. सो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई जंप टू द नेक्स्ट लाइन विच इज़ द टूल, तो ये टूल पोजीशन आ गई है. सो दिस इज़ ये अगर आप देखें सो इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. सो G00 X150 और Z50 पे टरेट लोकेट हो गया है और यहाँ पे जो है वो आपका फिर टूल चेंज होगा विच विल बी दिस नेक्स्ट कोड. सो इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है ना. सो आफ्टर पोजीशनिंग टूल चेंज का ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है. सो नेट विल बी G96 अगेन सरफेस स्पीड और सरफेस स्पीड जो है वो मैं कांस्टेंट रखूँगा.
surface speed means the cutting speed. So I will keep the cutting speed as a constant value, and it will be 200. So it will set, now it is setting the surface speed for the machine. अब जो है जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, सो M3 इज़ फॉर स्पिंडल डायरेक्शन एंड S इज़ फॉर स्पिंडल स्पीड, ठीक है ना. सो ये ब्लॉक जब रन होगा तो इट विल स्टार्ट स्पिनिंग द स्पिंडल. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका स्पिंडल जो है वो स्पिनिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा. एंड देन आफ्टर spindle on, the cutter will move to X0 position, and it will be in okay. नेक्स्ट जो होगा Z-80. G1 की कमांड में मैं जा रहा हूँ आगे, ठीक है. सो जस्ट लुक एट ईच स्टेप. फिर X90 आ रहा है, ठीक है. सो थोड़ा सा ऊपर आ गया है. देन X105, तो G00, X150 और Z50 नेक्स्ट लोकेशन होगी, ठीक है ना. सो X105 पे वो चला जाएगा इसके बाद, ठीक है ना. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन. नाउ ड्रिलिंग का ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म करना चाहूँ, सो द ट्विस्ट ड्रिल लोकेशन इज लेट अस से एट टूल नंबर 22. फॉर एग्जांपल वो 22 नंबर टूल है मशीन पे, तो आई विल राइट M6 और 222 मैंने लिख दिया है. एंड देन X0 Z0 पे चला जाएगा, ठीक है ना, जो कि एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट आ रहा है आपका वर्क पीस. सो फॉर एग्जांपल सेंटर में आप जो है वो ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं. सो लेट मी zoom this particular point, you know. So at this point we want to perform the drilling operation, ठीक है ना. सो अब ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगा G00 X0 Z0 वाला, so the cutter will move to this particular location, this one, ठीक है ना. सो ये आपका, अब देखिए येलो स्क्वायर जो है वो पॉइंट कर रहा है G00 X0 और Z0 को. आपने कटर जो है वो पोजीशन कर लिया है. द नेक्स्ट लाइन विल बी G01 और Z-30. सो G1 का ऑपरेशन आपने स्टार्ट किया बिकॉज इट इज़ अ लीनियर कट, सो इट विल मूव इन द Z डायरेक्शन, और Z चूँकि नेगेटिव वैल्यू हमने दी है, सो इट विल बी इंसर्टेड इन द वर्क पीस. और फीट रेट जो है वो 1 यूनिट है. देन इसके बाद टूल जो है वो वापस रिट्रैक्ट होगा Z0 पोजीशन पे. एंड देन G00 X150Z अगेन वो सेफर लोकेशन पे मैं तीसरा टूल जो है वो लोड कर दूंगा टूल पोस्ट पे, विच इज़ लेट अस से टूल नंबर 10, ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑपरेशन में हमने टूल नंबर 1 यूज़ किया. लेट अस से सेकंड ऑपरेशन के लिए जो टूल अवेलेबल है वो टूल नंबर 22 है, और थर्ड ऑपरेशन के लिए जो टूल अवेलेबल है दैट इज़ एट लेट अस से पोजीशन नंबर 10. सो सिंपली वही कोड आप यूज़ करेंगे M6 एंड देन डिजायर्ड टूल. सो M6 टूल नंबर 10, ठीक है ना. सो G00 X150 और Z50 पे चला जाएगा विच इज़ दिस लोकेशन, और इसके बाद फिर टूल चेंज की कमांड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी विच इज़ दिस वन. और फिर आपका G00 और X103 और Z-150 पे मैं कटर लोकेट कर दूंगा विच विल बी समवेयर ओवर हेयर, ठीक है. सो X103 मीन्स टोटल डायमीटर इसका 100 यूनिट्स है, तो
3 यूनिट्स अबव द वर्क पीस जो है वो आएगा, सो द कटर विल नॉट टच द वर्क पीस। और Z की लोकेशन जो है वो -150 है, तो यहाँ तक जो है वो तकरीबन आपका आ रहा था -130, ठीक है ना। सो ये लोकेशन जो है वो 130 है, तो इससे 20 यूनिट्स जो है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आपका ग्रूव बनेगा। एंड सपोज माय थर्ड ऑपरेशन इज द ग्रूव कटिंग। मैं सिर्फ सिंपली एक ग्रूव बनाना चाहता हूँ, और जो टूल नंबर 10 है वो पार्टिंग टूल है। सो द कटर विल मूव टू दैट डिजायर्ड पोजीशन, और इसके बाद ये लाइन G00 X103 और -150 है। So next code will be G1 again. I will insert the cutter inside the workpiece, ठीक है ना। So X103 से नेगेटिव वैल्यू में जाएगा, क्योंकि हम डायमीटर जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। सो यानी टोटल डेप्थ ऑफ दिस ग्रूव विल बी 20 यूनिट्स। So this is that next move which will be for groove cutting, ठीक है ना। So again let me show you, ठीक है ना। So ये वो ऑपरेशन है जो आपका ग्रूव कटिंग का ऑपरेशन होगा। एंड देन द टूल विल बी रिट्रैक्टेड बैक टूवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन। G01 में ही आएगा, क्योंकि स्टिल इट इज़ टचिंग द वर्क पीस, सो आपका ग्रूव जो है वो फिनिश आएगा। सो दिस विल बी द X103 पोजीशन, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दोबारा X150 और Z50 पे चला जाएगा, और then you can turn off the spindle and turn off the program. So अब अगर आप देखें तो when I execute this particular line, ठीक है ना, तो the cutter will move back to the initial position, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो अगेन जस्ट look at the complete program। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टेप बाय स्टेप के बजाय कंटिन्यूसली अब जाऊँ, या सो टूल नंबर 1 जो है वो चेंज हो गया, इट विल कम इन एक्शन, और जो प्लेन टर्निंग का ऑपरेशन है वो आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो ऑपरेशंस हैं, एक फेस का भी है। सो लेट मी स्टॉप एंड शो यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो पोजीशनिंग के बाद पहले हम एक्स डायरेक्शन में गए हैं, X0 तक। X0 तक मीन्स यानी डायमीटर में हमने 0 करके तो देखिए फर्स्ट आपका फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इट विल फर्स्ट फेस द एंड फेस एंड देन टेपर टर्निंग, प्लेन टर्निंग, दो स्टेप्स हैं। उसके बाद टूल चेंज होगा, विच इज़ दिस टूल, और वो आपका ड्रिलिंग टूल है। ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रूविंग का ऑपरेशन है। तो टूल चेंज परफॉर्म करके it will make that particular groove and will go back to the start position, which is X150 or Z50, this particular position. So that's it. You can practice on the CNC programs that I have included in the slides. So inshallah you will have no problems when you go through the slides that was provided.